Pranta, can you hear me? Okay. Hello. I'm Dr. Nicholas Lakra. Nicholas is initiating. Okay. I'm coordinator of the department. Just I very briefly, Nicholas, they are my faculty colleagues, Nicholas Lakra, Anup Kumar, Pranta Patnaik, and Neeru Prasad. They are our faculty member in the Department of Culture and Media Studies. Please, Nicholas, go ahead. I'd like to initiate. Um, uh, I very cordially invite everyone for this special lecture series. CMS Department of Culture and Media Studies conducts usually on Friday a series of lecture on different topics related to media, society, and culture. And on that series, it is third of that series. We have very special guest to speak, deliver lecture on the topic anchoring skill. So this is a very attracting topic, in fact. So everybody, whoever launched in the field of media wants to become a anchor. So we feel that this topic is very significant for media students of media studies, and on this topic we have very significant person from the media world, very prominent personality in media, from media world, Maha Siddiqui. She is associated with CNN News18. So she has very good experience in this field, and we hope that whoever participating in this lecture will benefit a lot. Nicholas, we can't hear you. Nicholas? Siddiqui, madam. Yes, Before we go ahead, I would like to welcome our colleague, Dr. Pranta Patnaik, to just give a brief introduction about our guest today. Okay, Pranta sir. Yeah, thank you, Dr. Lakra. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Professor Dhulia sir, Madam Maha Siddiqui, and welcome all the students of our department. And also, we are very glad that students from other departments have joined, and we have also our PRO Madam Anuradha Mittal also who have joined. So it's a great opportunity to hear Miss Maha Siddiqui, who is the editor and Foreign Affairs and is an anchor at CNN News 18. In a career spanning nearly 2 decades, he has reported on Indian foreign relations with the region from China to Pakistan and beyond for leading broadcast and print media organizations. She has covered politics and also about the parliament issues, and she is a Chevening scholar and has attended Bournemouth University in the UK. And I'm very much pleased to introduce Ms. Maha Siddiqui because I think I have seen the news channel and I have seen you anchoring, and it's really a great pleasure for me to introduce you. And now, without wasting much of time, I would like Ms. Maha Siddiqui to take over. Thank you, ma'am. Thank you for having me and allowing me to discuss and share my experiences with your students there. Many thanks to Dhulia sir. He's been my teacher at IMC, and a lot of what I do today I owe to IMC and to Dhulia sir, because they have really made me what I am today. So I'll take this opportunity to extend my thanks to sir as well. And many thanks for that very kind introduction. So we'll immediately start off with this topic today that we have at hand, that is of anchoring skills. Now, I personally feel, and this is a thought that that was put in our minds while we were at IMC, and I have to agree that this has helped me not just become a good journalist but a good anchor. And the fact is that one needs to be a good reporter or a person who has worked hard on the desk before taking that jump into anchoring.
And the simple reason for that is that it just gives you a lot more confidence when you are there all by yourself, facing all sorts of situations that arise during anchoring. It's not just about reading off the teleprompter, as many people believe that you have just, everything is loaded on the teleprompter for you and you're just reading from that. It's no longer like that. Those were really old days in Doordarshan, when Doordarshan was the only channel available, and only information coming in through Doordarshan, which was all vetted very carefully and then put out for the viewers. Now, with intense competition, with a lot of breaking news that keeps coming in all the time, sometimes we are virtually not using the teleprompter at all, because we are all on our own, with the director constantly giving us instructions about what new information has come in. We have our systems in place where information gets flashed and we just need to take that information and start speaking on our own. So for those kind of situations, and that you are not falling either short of words or information or what to do, that you do not panic in a situation where suddenly you have been told that there is something new happening, it's breaking news, and you have to handle the situation. For all that, a good grounding in reporting or having worked on the desk really helps. This is because when you are reporting, for instance, you are anyway going live a lot of times in a day, doing chats, which is between the studio and the reporter. So you gain the confidence to be able to speak well. As far as a desk person is concerned, they are handling so many stories in a day, writing those stories and preparing them for the rundowns and bulletins, that they get an overall view of what goes into a news bulletin and what situations they can be confronted with. So as an anchor now, I would personally advise all students to look very seriously at building a ground in reporting or on the desk writing stories before taking the jump into anchoring. Now, as far as, and I'll just pause here to also tell all the students that they can ask me questions. They can put out the questions. I think there will be a chat box available if I'm correct. Or you can just raise your hands and then ask a question. Let's try to make this interactive. And I will also try to keep it bilingual so that those who are more comfortable with Hindi also understand me. तो अभी तक मैंने बात की कि एंकर बनने से पहले आपको जरूरत है कि आपकी रिपोर्टिंग या जो डेस्क पे आपने काम किया हो उसमें आपने मन लगा के काम किया हो, क्योंकि वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप किसी तरह भी सिचुएशन एंकरिंग में मैनेज कर सकते हैं. अब अगर सिर्फ एंकरिंग की बात करी जाए तो एक ट्रेडिशनल वे एंकरिंग का जो मैंने आपको बताया टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ना होता है, वो भी एक स्किल होती है. उसमें भी वक्त लगता है लोगों को टेलीप्रॉम्प्टर हैंडल करने में. सामने कैमरा में लिख के आता है जो आपकी स्टोरी होती है, लेकिन उसको कितनी पेस पे मूव करना है, कभी आपके पास हैंड में प्रॉम्प्टर होता है, कभी आपके पास फुट पे प्रॉम्प्टर होता है, तो वो सब करने में, लेकिन वो ड्राइविंग की तरह है या स्विमिंग की तरह है कि फटाफट एक दो बार करने से एक इंसान को आदत पड़ जाती है, जैसे ब्रेक्स लगाते हैं, एक्सेलरेटर दबाते हैं, उसी तरह का काम है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये तो मशीन्स हैं, मशीन्स कभी भी ब्रेक डाउन हो सकती हैं और टेलीप्रॉम्प्टर्स भी अक्सर ब्रेक डाउन हो जाते हैं. तो आपको वो स्किल होनी चाहिए कि जो स्टोरी सामने आ रही है, अगर एकदम से टेलीप्रॉम्प्टर ब्रेक डाउन हो गया तो आपको फिर क्या करना है. उस स्टोरी के बारे में आपको जितनी जानकारी होनी चाहिए वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जानकारी जो हर स्टोरी के बारे में होनी चाहिए वो आपके किटी में जरूर होनी चाहिए. तो उसके लिए एंकरिंग, जैसे अगर आप एक रेगुलर शो एंकर करते हैं, समझ लीजिए शाम को, तो प्राइम टाइम में आजकल जो ट्रेंड है वो ज्यादा है डिबेट्स का. तो हम अगर उसको छोड़ दें, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. अगर आप मॉर्निंग और डे बैंड देखें तो उसमें ज्यादातर आप हर तरह की स्टोरीज लेते हैं, इंडिया की स्टोरीज लेते हैं, बाहर की स्टोरीज लेते हैं. आजकल चैनल्स बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स स्टोरीज पे स्ट्रेस नहीं करते हैं, लेकिन
पहले स्पोर्ट्स की स्टोरीज भी बहुत ली जाती थी, एंटरटेनमेंट स्टोरीज भी ली जाती थी, और आपको ये दिमाग में रख के चलना है कि ब्रेकिंग न्यूज किसी भी चीज पर हो सकती है। कल को एक बहुत बड़ी सेंचुरी लग सकती है। अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच था, वो इतना बड़ा टेस्ट मैच इंडिया ने जीता, तो उसकी अगर ब्रेकिंग आए आपके सामने, तो आपको ऑलराउंड नॉलेज हर इशू पे होनी होती है। पॉलिटिक्स हो, फॉरेन पॉलिसी हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन एक बेसिक नॉलेज आपको हर चीज की रखनी चाहिए। अब आजकल जो एक आपके पास कंप्यूटर रहता है, एंकरिंग करते वक्त ज्यादातर लैपटॉप्स दिए जाते हैं, तो बहुत हद तक आपका काम आसान भी हो गया है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज के बारे में एकदम से नहीं पता है, तो आप अगर आपके पास टाइम है, 30 सेकंड्स भी आपको मिले हैं, तो आप एक बेसिक सर्च कर सकते हैं न्यूज की कि ये क्या स्टोरी है, या फिर आप अपने डायरेक्टर को इशारे से बता सकते हैं कि आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और न्यूज रूम आपको वो इन्फॉर्मेशन फोन पे या व्हाट्सएप किसी तरह भी भेज सकता है। बट द आइडिया इज नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग देयर वर्क। पीसीआर भी काम कर रहा है, वो शो रोल कर रहे हैं, उनके पास टेक्निकल इश्यूज बहुत होते हैं अपने पास। डेस्क उस वक्त जो स्क्रीन पे टेक्स्ट चल रहा होता है वो बना रहा होता है। आपकी कोई हेल्प कर पाए या ना कर पाए, you do not know whether anybody will be able to help you, लेकिन आप कैमरे के सामने हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक स्टोरी पे बेसिक एलिमेंट्स बोल सकते हैं। अब एंकरिंग के लिए भी keep certain things that you are taught during reporting in mind, जो बेसिक्स हैं, where, what, how, when, जो आपके बेसिक्स हैं, तो उससे आपका जो इमीडिएट एंकरिंग है वो इजी हो जाती है कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है, आप यूजुअली क्या होता है कि जो ब्रेकिंग न्यूज में एक एक रिपोर्टर को पैच कर दिया जाता है ताकि आप फटाफट उससे सवाल पूछ लें। तो आप, अगर आपको उस इशू के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, तो आप बेसिक सवाल पूछें, और जब रिपोर्टर बताएगा तो आपको खुद ब खुद इशू समझ में आ जाएगा, तो आप उस पर बिल्डअप कर सकते हैं। अब ये रही आपकी नॉलेज की स्किल्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एंकरिंग में और बहुत सारी स्किल्स होती हैं, सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर से, जैसे मैंने बताया, पढ़ना एक स्किल नहीं है। अच्छे सवाल पूछना, asking the right and relevant questions, which anyway is a journalistic trait which you will learn over time. You can also look at other anchors to see how, in the years that you're grooming yourself to become an anchor, you should try and take a look at some of the best anchors, not just from India but from around the world, to see how they are handling a situation of this nature, where there is a breaking news, how they are handling it, what kind of questions they ask, or just to get an idea of how to conduct yourself well as an anchor. Secondly, anchoring, there is a presentation part as well. So in presentation, whereas in India, because we traditionally speak very fast, most Indians, while anchoring as well, speak in a pacey manner, whether it be English or Hindi. हम देखते हैं कि हमारे एंकर्स तेज बोलते हैं, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी उसको उनको ग्रास्प होती है तेज सुनने और उसको तेज प्रोसेस करने की, क्योंकि हम कल्चरली जल्दी जल्दी बोलने के आदी हैं। आप अगर कंपेयर करेंगे इसको किसी और कंट्री में, जैसे अगर आप बीबीसी देखें या कोई और चैनल CNN देखें, तो वो अपनी भाषा बोल रहे हैं, इंग्लिश ही बोल रहे हैं, लेकिन वो बहुत एक स्लो भी नहीं कहूंगी, लेकिन एक इजी पेस पे बोलते हैं। तो वो पेस, किस पेस पे आप बोलना चाहते हैं, आपका क्या अपने स्टाइल होंगे एंकरिंग की, ये सब चीजें वक्त के साथ, विद टाइम, यू विल अंडरस्टैंड what works best for you. Looks is also an important part. How you turn out while you anchor is also a very important part of anchoring, for the simple reason that it should not be distracting. Also, you should be neat and well turned out, so that the viewer is face to face with a pleasant personality. Nobody wants to see somebody looking disheveled, बाल इधर बिखरे हुए हैं, वो distracting भी होता है। इसलिए एक neat appearance हरदम जरूरी है, रिपोर्टिंग के लिए भी जरूरी है और एंकरिंग के लिए भी जरूरी है। उस सब के लिए डिपार्टमेंट होता है जो आपको हेल्प करता है, स्टाइलिंग या मेकअप
डिपार्टमेंट होता है जो आपको बेसिक मेकअप और हेयर एक बेसिक करके आपको हेल्प करता है। अब अगर हम बैंड्स की बात करें, जैसे मैंने बोला मॉर्निंग, डे और इवनिंग बैंड, रफली दीज आर द 3 bands in which we divide the anchoring. So morning bands again will have a lot of information that has come in overnight, and a lot of it comes from other countries. Like for instance, a lot of that happens from America or United Kingdom, things that have happened overnight, and usually it's from America because obviously because of the time difference. A lot of developing stuff also happens in the morning, because for instance, if I give you the example that parliament session is on right now, so early morning, what the strategy of the government today in parliament might be, or the opposition, all those details start coming in the morning, because the parliament session starts at 11. So discussions start happening from early morning within various political parties. So those details usually come in the morning. So the morning and half of the day band, at least till 2 p.m., there will be a lot of developing news, a lot of breaking news that happens. So ideally, you should have an idea of what is likely to happen, and that you will be helped by every organization has an assignment desk. Assignment desk's role is to collate all the stuff of what is going to happen the next day and in the future, like they have a forward planning idea as well, and to coordinate with the reporters. So they prepare a list, all organizations do this, of what to expect the next day. As an anchor, it is advisable to go through that list, because you will get a good idea of what is going to be carried during your shows or your slots, and then that will help you prepare accordingly. You can read newspaper articles accordingly, so that if there is any development in the story and there is not much written on the teleprompter, you can on your own ad lib. We call it ad libbing, which means you are speaking on your own without any other help that has been given to you by way of a teleprompter. These are some of the basics of anchoring, as I would say. There are a lot of other technical, aspects to anchoring, but a lot of anchors don't deal with them. There is technical stuff, for instance, what frame of anchoring, or if you have a special show, how should you be doing it, what segments should you have to make it more interesting. So all that is decided with a team. Now, we have discussed the morning and the day band. I'll discuss the evening band. Now, in India, there is a trend now that the entire evening band, starting say 6 p.m. on most channels, is debate based, is discussion based. For that, the anchor also needs to not just decide on the topic and the subject that is in consultation with the rest of the editorial and the newsroom, but you also need to look at who the best guests for your show will be. So on most occasions, the anchors are helping the guest desk in looking for the relevant people for the discussion and debate. For instance, if you look at the farm laws and the debate that is going on around it, so you will discuss with your guest desk how to be able to get the right kind of mix of people. So if it's a political debate, you will try to get people from the government, you will try to get people from the opposition parties, you will try to get somebody from the farmers side to discuss the various aspects of the laws. Nowadays, and I think somebody just asked me that question about Twitter. I mean, I didn't get the whole question, but I saw a glimpse of that. The question regarding social media. A lot of nowadays, we do a lot of promotionals for our shows, or to inform the viewer what is likely to come up in our show through social media. So social media, Twitter is one of the means that journalists are using. They inform the viewer that this is what we are going to discuss at 8 p.m. Sometimes we open up our phone lines as well. So we promote that as well, that this is, for instance, if there is a major issue with regards to, say, roads or electricity breakdown in some particular city, and people are fed up with it, then it is a citizen driven story. So then we open up the phone lines for people to discuss their issues, tell us what's exactly happening and what is the best solution to it. So there are different formats. There is a regular news show format where you will have developing news, breaking news,
there is a show format which can be either a set show where you have stories which are prepared and are running, and you are just taking links in between, which is the job of the anchor. There are discussion based shows, debate shows, which seem to be most popular at the moment, considering that Indians are pretty opinionated and they have an opinion and a view about things. I think they immensely like debate and discussion shows. Now we are seeing that there is a lot of discussion on that aspect as well, because some of these debate shows have turned out to be very extreme in nature. They fan, sometimes they can fan passions as well. So as a responsible journalist, you need to be mindful of these, that you know, whatever you put out on air, a lot many people are watching it. They might get influenced by what is said on air. So a job of an anchor is to curate or moderate a discussion where the viewer has something to take away from it. For instance, again, I will give you the example of farm laws. It would be good if there is a healthy mix of people on your debate panel, so that the aspects of the law and why people are opposed to it, what can be done to improve it, are brought to the fore, so that once the viewer goes back, it's not like it's just a fight that they have heard on screen. They should be able to carry some substance from it, and you as a journalist, it's your responsibility to help the people of the country think. Thinking is very important. It's not just your job to think. Of course, journalists need to think a lot, but it is also your job to inculcate a sense of thought and to look at issues thoughtfully, for the general public as well, for your viewers as well. This is the least that you owe to your viewers, who are giving you 30 minutes of their time. Time is very precious. People are pressed for time. They are working, you know, almost 24/7 now with the pandemic and working out of home. If they have come for appointment viewing, if you have a show at 8 p.m. and they really like it and they watch it for say 30 minutes to 1 hour, then this is the least you can do, that give them information that they can take back and they can think about it. So these are some of the basic aspects of anchoring. I would now like students to ask me questions, because I think that will make it more interactive, and if I have left out anything, then that will be covered. Students, please feel free to ask questions. Any one of the participants? Ji, Good afternoon, Abhijit ma'am. Mishra wants to how do we gain confidence? This is Sushmita's asking that question. Just slow down your questions. There are a lot more. How Ma'am, important? let me read for you one by one, and Yeah, then you so can I'll answer. take the first question. How do we gain confidence? Confidence वाली बात मैंने अभी beginning में start भी की थी. Confidence वक्त के साथ ही आता है. Confidence experience के साथ ही आता है. Confidence कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कोई एक घुट्टी बना के पिला दे और आपको confidence आ जाएगा. Confidence beginning के समझ लीजिए कुछ महीने आप रहेंगे घबराए हुए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब इंसान एंग्शियस होता है तो वो प्रिपरेशन अच्छी करता है, तो उसमें उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऑन एयर आपकी एंजाइटी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि व्यूअर को अगर ये सेंस हो जाता है कि एंकर या रिपोर्टर एंग्शियस है, तो आप मेंटली सोचिए, अगर आपको कोई एंग्शियस पर्सन दिख रहा है या घबराया हुआ पर्सन दिख रहा है, तो आप उसकी बात पे यकीन नहीं करना चाहेंगे। जर्नलिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि वो बोल रहा है वो सच बोले, और सच जो बोल रहा है तो वो कन्विक्शन के साथ बोले। कन्विक्शन तभी आता है जब आपको पूरा सच पता होता है एक इशू के बारे में। अब डेवलपिंग सिचुएशन में कभी कभी ऐसा होता है, आप समझ लीजिए जैसे कहीं पर टेंशन हो गई किसी एरिया में, अभी फार्म लॉज चलते के चलते दिल्ली के बॉर्डर पे ही टेंशन चल रही थी। उस केस में आप अपनी ओपिनियन ना दें तो बेहतर है, क्योंकि आप आप सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करें, फार्मर्स क्या बोल रहे हैं, और आपने
सरकार क्या बोल रही है कि ये लॉज कैसे फिक्स हो सकते हैं, ऑपोजिशन क्या बोल रही है, और जो आप ग्राउंड पे देख रहे हैं, ग्राउंड पे आप जो भी देख रहे हैं वो आप नरेट करें। अगर आप जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं तो आपको कभी नर्वसनेस नहीं होगी, आप खुद ही कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि जो आप बता रहे हैं वो आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज बता रहे हैं जो आपने देखी ना हो। नर्वसनेस तब ज्यादा होती है जब आप गलत चीज बयान कर रहे होते हैं। जब आप सच बोल रहे होंगे तो आपको नर्वसनेस नहीं होगी। एज एन एंकर भी ये जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि विजुअल्स आपके सामने चल रहे होते हैं, आपको बोला जाता है कि विजुअल्स देख के आप एडलिप करिए क्योंकि अभी रिपोर्टर पैच नहीं हुआ है। इन दैट केस आपको जो विजुअल्स में दिख रहा हो आप वही सीधे सीधे व्यूअर को बताएं। तो धीमे धीमे अगर जब आप एक चीज बिल्कुल क्लियर जो दिख रही है वही बता रहे हैं तो एनीवे आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा, कॉन्फिडेंस आपका धीमे धीमे बिल्ड होगा जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी किसी भी मुद्दे पे। तो अगर आप स्पेशलाइज जैसे कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने फॉरेन अफेयर्स में करा है ओवर द इयर्स, तो मैं उस एरिया में कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि वो मैंने एज अ बीट कवर किया है रिपोर्टिंग में। तो मुझे ये पता है कि जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ। और जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है, अगर एज अ रिपोर्टर एंड इवन एज एन एंकर, इसमें कोई हर्ज नहीं है कहने में दैट वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, बट वी विल get more details and come back to our viewers. I think all these are ways of building confidence in yourself. Where do we start our preparation for anchoring? One question coming through. So, as I said, the basis of your anchoring should be good reporting or good desk work. If you have done that, you have the grounding, then you will anyway be a good anchor, because anchoring is about speaking skills. So certainly the more you read, the more you converse with others, जो भी भाषा है, अगर आप इंग्लिश में एंकर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश में कन्वर्स कीजिए, क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो बहुत लोगों को पिकअप करने में टाइम लगता है। तो आप जितनी कॉन्वर्सेशन करेंगे इंग्लिश में उतना आप इम्प्रूव होंगे, जितनी आप रीडिंग करेंगे नए अच्छे वर्ड्स, सही वर्ड्स आपके सामने आएंगे। हिंदी में भी यही है, आप उस लैंग्वेज में और पढ़िए ताकि आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड्स और शब्द पता हो कोई भी सिचुएशन डिस्क्राइब करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जितना आप अपने आप को नॉलेज के स्फीयर में ग्रूम करेंगे, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल होगा एंकरिंग करते वक्त। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं आपकी। अगर समझ लीजिए आज एंकरिंग है तो आप एनीवे एज अ जर्नलिस्ट आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ही, लेकिन जैसे आज आपकी एंकरिंग है और आपको पता है कि आपके चैनल में ये सारे 5-6 मुद्दे हैं जो बड़ी स्टोरीज करी जा रही हैं आज, तो आप उन इश्यूज पे उस दिन के अखबार में और पढ़ें, अंदर के पेजेस में भी पढ़ें कि क्या लिखा है, ताकि आपको ओवरऑल नॉलेज हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। दूसरा, एंकरिंग करने से पहले अपने को आधा घंटा दें, 15 मिनट दें, ताकि आप रन डाउन जो बेसिक बनाई गई होगी वो देख सकें। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। इफ यू गो थ्रू योर रन डाउन यू कैन मेक चेंजेस। जैसे आपसे प्रीवियस जो एंकर आया होगा वो एक मुद्दे को किसी और तरह एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन आप उसका कुछ और एक्सप्लेन, मतलब आप उसको और अच्छा बना सकते हैं। सो पुट इट डाउन ऑन योर टेलीप्रॉम्प्टर सो दैट you can speak better. For instance, it is more conversational. It is important to keep the language conversational on TV. Very heavy words usage on TV is sometimes not recommended, because TV is more like a conversation between the person, the anchor or the reporter, with the viewer. So the simpler the language, the better. But you need to use the right words at the right time. So it is important that sometimes you rework on the stories that are on the prompter, you write them yourself, so that will give you confidence that you know the story, and secondly you would have written it in a language that you find easy to read. There were several other questions I think I have missed. Ma'am, there is one question. Is writing skills necessary for an anchor? Yes, of course, writing skills are important, because the stories that
are going directly on the anchor, on the teleprompter, which are in the rundown initially, if you rework them, then your language skills are important, right? But as I'm saying, television is not about using very flowery language. So you don't have to be a poet or an author level writer. You just need to make your writing comprehensive and easy to understand, because you have to remember, we are speaking to a person. It is not like it's not like we are writing so that the person can, if some a person hasn't understood, can reread it. You have said it once, it should be easy to understand in one go. So your language has to be simple, and that is why writing skills are important. Thank you. And there is one more question from Anamika Jha from Odisha. She wants to know how to handle the difficult person or a difficult situation, and how one can believe which stories are more important to believe and report. Very pertinent. All right. So yes, there are sometimes very difficult guests on debates. People who, try to put down a co-panelist, or people who try to shout even the anchor down. It In that case, the role of an anchor becomes very important. अगर कोई पैनलिस्ट बदतमीजी कर रहा हो, तो आप उसको पोलाइटली कह सकते हैं कि आप अपने को पैनलिस्ट से तमीज और इज्जत से बात करिए. बहुत सारे लोग उसमें भी भड़क जाते हैं, लेकिन ये कहने में कोई हर्ज नहीं है. एक नॉर्मल सिचुएशन सोचिए अपने सामने. अगर आप बैठे हैं 4 लोगों के बीच में, और एक पर्सन दूसरे से बदतमीजी कर रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना कि आवाज नीचे रख के बात कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखिए इन इजी लैंग्वेज में. तो आपको यही चीज सोचनी पड़ेगी इस सिचुएशन में भी, कि आप जो भी बोलें, आप ऐसे बोलें कि ना दूसरे को वो बात बुरी लगे, लेकिन आप अपनी भी बात रखें, और एक सिविल डिबेट होना चाहिए. कोई उसमें लड़ाई झगड़े की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और ये दारोमदार आप पे है. Excuse me. Yeah. Okay, so this is Gaurav Gautam from Nagaon, Assam. Okay. My question was that how important is it to keep personal Twitter handles updated with news and information? Because we have seen you as well doing the same on Twitter. Sorry, come again. I didn't get you. My question is that how important is it to keep personal Twitter handles updated with news and information, just like you do in your Twitter handle as well? Yes. Okay. So, it is up to you. If you want to use social media, you can use social media. There are some anchors who do not like to use social media that much. They keep it very limited. Even that is acceptable. But a lot of media channels nowadays encourage their reporters and anchors to be on social media, but they have to follow certain guidelines, and they are advised to keep their social media handles very factual in nature, because at the end of the day, your personal opinion might be sometimes construed by others as being the opinion of the channel. That is something that mostly the organizations are not comfortable with, because you are adhering to an organization's you carry an organization's name as well. But most channels, most media organizations nowadays ask their journalists to keep a personal social media handle, and to report information regarding their stories there as well. Good afternoon, ma'am. This is Abhijit Mishra from Central University of Odisha. And my question is, what are your views on representing news in a dramatical frame of action while anchoring? Sorry, what are your views on dramatizing a story? No? That is what you're saying while anchoring? Yes, ma'am. I personally am not very comfortable with it. And I mean, if any of you have watched me, you would know that I am very, if I can put it mildly, constrained in my anchoring. I don't like over the top reactions to any subject or issue. I feel that every issue can be discussed and debated, and everything can be done in a civil manner. So I'm personally not in favor of dramatizing any story.
and there are differing views, there are differing ideologies of channels also. For instance, if I give you the example of America, you will have a Fox News which dramatizes. You will have other channels that will take a story in a very matter of fact way. My personal view is that it should be very facts driven and less of opinion, because for opinion there are experts who you can call on your show and they can give their expert opinions. They are experts in particular fields. And dramatizing of stories, I don't think I am personally comfortable with. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Hi. Ma'am, this is Adil from University of Kashmir. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग एंकरिंग अगर एंकर को ज्यादा नॉलेज ना हो सब्जेक्ट के बारे में तो उस वक्त क्या करना चाहिए? जी, ठीक है, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। एंकरिंग में अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपको आप हर सब्जेक्ट पे तो एक्सपर्ट हो नहीं सकते। तो अगर आपको समझ लीजिए स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं है, और मतलब बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, और कोई स्पोर्ट्स की स्टोरी आ गई, तो उसमें कोई प्रैक्टिकल हैंडी टूल्स मैंने आपको बताया। जैसे सबके पास आजकल एंकरिंग के टाइम लैपटॉप होता है, आप एक क्विक सर्च मार लें और फिर न्यूज की सर्च मारें, जेनरिक सर्च ना मारें उस सब्जेक्ट की, और जैसे अगर गूगल सर्च मार रहे हैं उस पर न्यूज पे चले जाएं, तो आपको कुछ बेसिक न्यूज आर्टिकल्स जो लेटेस्ट हैं वो क्यूरेट होके आ जाएंगे। आप एक ग्लांस दे दें जब जब तक आप बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हो रिपोर्टर से। उसके बाद जब आपको रिपोर्टर भी बताएगा उस स्टोरी के बारे में, तो आपको खुद ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप उस पर और सवाल पूछ सकते हैं। दिक्कत तब आती है जब एकदम से रिपोर्टर नहीं मिलता और आपको एडलिप करना होता है। उस केस में जैसा कि मैंने बताया, एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। जैसे आपके कान में आपके स्टूडियो डायरेक्टर बता देंगे कि फॉर इंस्टेंस मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, पार्लियामेंट का एग्जांपल दे देती हूँ कि हाउस अडजर्न हो गया है। अब एज एन एंकर आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि आज ऐसा क्या इशू है जिसके ऊपर हाउस में हंगामा हो रहा था। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हाउस में किस वजह से हंगामा हो रहा था, तो आप थोड़ा टाइम किल करने के लिए पुराने 1-2 दिन पुरानी कोई बात जो हाउस में रेज हुई हो फैक्चुअली वो बताएं कि कल फार्म इश्यूज का मुद्दा उठा था, तो अभी हम अपने रिपोर्टर से पता करते हैं कि क्या उसी मुद्दे की वजह से फिर से एडजर्नमेंट हुई है कि ये कोई और इशू है जिस पे आज सदन में हंगामा हुआ है। तो बहुत से तरीके हैं एक स्टोरी को एडलिप करने के। ये सब आपको तभी समझ में ज्यादा आएगा जब आप एंकरिंग करना शुरू करेंगे कि आप किन किन सिचुएशन से कंफ्रंट हो सकते हैं और उनके क्या क्या तोड़ हैं। इमीडिएट तोड़ यही है कि आप एक क्विक सर्च मार लें और देख लें। ब्रेकिंग न्यूज में ऑब्वियसली गूगल पे भी वो नहीं आ पाएगा कि क्या हुआ है, लेकिन आपको एक बैकग्राउंड मिल सकता है। जब तक आप व्यूअर को वो बैकग्राउंड बताएंगे तब तक आपको रिपोर्टर पैच कर दिया जाएगा, और फिर आप जब सवाल पूछेंगे तो एनीवे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। नोटपैड और पेंसिल या पेन अपने पास रखें, या लैपटॉप पे वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के रखें, ताकि आप फटाफट कुछ मेन पॉइंट्स जो रिपोर्टर कह रहा है वो आप नोट डाउन कर लें, ताकि जब चेंज ओवर हो और शायद रिपोर्टर को जाके और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो आपके पास वो पॉइंट्स सामने होंगे और फिर आप उन्हीं पॉइंट्स पे आगे बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। Hello, ma'am. Good evening. जी, yes, Nidhi. Ma'am, this is Jaya Bharti. Okay, yes, Jaya, go ahead. Ma'am, at first, I feel very lucky to get a chance to talk to you. So thank you to come here, and thanks to the university to invite you. Ma'am, actually, मेरे 3 questions हैं. जी. मैं MA के स्टूडेंट हूँ एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने एक लोकल न्यूज चैनल में वर्क किया था। तो वहां पे मैंने एज अ न्यूज एंकर भी वर्क किया है, और वहां से मुझे हमेशा ये फीडबैक मिला है कि तुम्हारी वॉइस थोड़ी बोल्ड होनी चाहिए थी। तो ये अपनी वॉइस को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड सेकंड थिंग कि जब भी टेलीप्रॉम्प्टर में कोई न्यूज आता है और उसमें कुछ मिस्टेक्स होते हैं, तो वो फ्लो के टाइम पे वही वर्ड्स हम लोग पढ़ जाते हैं, जबकि उसमें हमें सुधारने की जरूरत होती है, लेकिन फ्लो बिगड़ जाता है उस टाइम, वो नहीं हो पाता है। एंड थर्ड है कि हम लोग अपने बीट को कैसे पकड़ेंगे, कि हमारा कौन सा बीट होना चाहिए।
ठीक है, तो पहले आखिरी सवाल से स्टार्ट करती हूँ। बीट आइडियली जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आप एज अ बीट चूज करें। जैसे अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स से शुरू करें, फॉरेन अफेयर्स में इंटरेस्ट है तो फॉरेन अफेयर्स में करें चूज। अक्सर ऐसा होता है कि ये चॉइस हर को अवेलेबल नहीं होती है जब आप नई जगह ज्वाइन करते हैं, जब आप एक रुकी रिपोर्टर होते हैं। तो जो चैनल या न्यूज़पेपर आपको बीट दे, आप उसी बीट पे लग जाइए, अपना सारी मेहनत उसी बीट में करिए। और धीमे धीमे जब आपको दिखे कि दूसरी तरफ जगह बन रही है, जैसे अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं लेकिन आपको इमीडिएटली पॉलिटिकल बीट नहीं दी गई, तो आप कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। आपको जब दिखे कि कोई किसी ने रिजाइन कर दिया, कोई चला गया है, या कोई उनको जूनियर रिपोर्टर की जरूरत है, तो आप अपने वॉलंटियर करें। आप कहें कि मैं अपनी बीट के साथ साथ ये बीट भी करना चाहती हूँ। तो उस तरह से धीमे धीमे आप उस दूसरी बीट में भी जा सकते हैं। आपका सवाल था कि फ्लो बिगड़ जाता है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रॉम्प्टर से कभी कभी वर्ड्स गलत आते हैं तो आप पढ़ जाते हैं, बिकॉज आप पढ़ रहे होते हैं। अगर अगर कोई ग्रॉस फैक्चुअल एरर है तो आप इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने को रोकें और करेक्ट करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि व्यूअर भी समझता है कि बहुत जल्दी जल्दी कभी इंफॉर्मेशन आ रही है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत पढ़ दिया। गलत के बजाय अपनी गलती को सुधारना इज मच बेटर। तो आपने अगर एक फ्लो में कुछ पढ़ भी दिया हो, अपने को जब आप रियलाइज करें तो आप उसको या तो पॉज करके आप कह सकते हैं एक्चुअली दिस इज द सिचुएशन, या अपना कोई मेथड डिवाइस कर सकते हैं जिसमें बहुत ग्लेयरिंग ना हो कि मिस्टेक हुई है और आपने एक बाद में, या आप कह सकते हैं कि इसमें अपडेट आया है और ये हमारे पास ज्यादा, ये इसमें एडेड इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन अपडेट भी हो जाएगी और ऐसा भी नहीं लगेगा कि जो वर्ड का यूसेज या कुछ था ऊपर वो गलत था। और तीसरा सवाल आपका क्या था? सॉरी आई फॉरगेट, जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा था। यस मैम, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि जब भी मैंने वर्क किया एज अ न्यूज एंकर, मुझे फीडबैक अच्छा, के वॉइस मॉड्यूलेशन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कि अगर उनको लगता है आपकी वॉइस बहुत श्रिल है, अक्सर फीमेल एंकर्स के साथ हो जाता है, श्रिल होती है वॉइस, आप वर्क कर सकते हैं। आप अपनी वॉइस को थोड़ा सा नीचे करके पिच पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपकी वॉइस कैसे साउंड करेगी अगर आप एक पिच नीचे करें। जैसे आर्टिस्ट करते हैं, ये थोड़ा उस रेल्म में फॉल करता है, लेकिन इट इज एब्सोल्युटली डूएबल। अगर आपको ये फीडबैक मिला है तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। और जिसने फीडबैक दिया है आप उससे ये भी पूछिए कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, क्या मेरी पिच बहुत हाई है, मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, क्या क्या इशू है। जब वो आपको फीडबैक देगा आप उस फीडबैक के हिसाब से वर्क करें, और सिर्फ एक पर्सन के फीडबैक पे नहीं जाए। क्योंकि किसी एक पर्सन को आपकी पिच बहुत हाई लग सकती है लेकिन दूसरे को लगे कि ये हमारे चैनल के हिसाब से फिट बैठ रही है। तो 2-3 लोगों का फीडबैक आइडियली लेके और फिर उस हिसाब से वॉइस को मॉड्यूलेट और वॉइस का पिच नीचे या ऊपर करना आ सकता है। इट इज डूएबल, ऐसा नहीं है, बहुत लोग करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Good afternoon, I ma'am. have the last, sorry to tell you that I have the last 2-3 minutes. I have to rush again for an anchoring assignment. So Yeah, I ma'am, can I'll take make it one more quick. question. Yes. Yeah. Ma'am, as a fresher, you get to hear that you don't get a chance to be in front of the camera all of a sudden. So you have to build your career there. So how did you build your career? Did you get a chance just like that? Or did you go for journalism first, then reporting, and then anchoring? So I followed all the routes that are traditionally there. So I went to journalism school, I went to IMC, and that's where Dhulia sir was my teacher. After which, in the first place that I joined, I did desk work for 6 months. After which, that was Times of India online, and then after that I went to Doordarshan because Doordarshan was directly taking students from IMC. Doordarshan was a good learning ground because they allowed you to do a lot, many kinds of stories. They would give you different types of assignments. So not everybody, not every channel allows that. But so the idea is to be able to do all these things before you go in for anchoring. So I did desk work for a bit.
Then they put us all into reporting because they had a set format for all the students who came from IMC. So for 1 month we were put on the desk. We were supposed to rewrite stories. We were supposed to take stories from agencies and write them and put them on air. Then the next month, they started sending us out for reporting. And after 6 months, after about 6 months, they asked some of us to audition for anchoring. We auditioned for anchoring. Obviously all of us were not great because we had just started, but we were taught in IMC, so we knew the basics of anchoring. uh, so initially we were given easier slots, so like the last show of the day where there is no chance of a breaking news happening, or the first morning show where everything is set. So once we started doing those properly, then we graduated to doing regular shows. Thank you, ma'am. Sir, I will have to leave now. Is that okay? Well, I think fine, Maha. Okay. Thank you very much. I Thank appreciate you your very much, time. But sir. yeah, We will have next now opportunity. I No would like to problem. invite Dr. Anup Kumar to give the vote of thanks. Thank you very much, sir. Thank you very much, Maha Siddiqui ma'am, for the excellent session on anchoring skills. Thank you very much for accepting our invitation. It was honor to invite you as a guest speaker for our weekly lecture series. Thank you very much, ma'am, for sharing your valuable knowledge with our students. And thank you all the students for joining from our department and from different parts of our country and making this session interactive. Thank you, everyone. Thank you very much, ma'am, once again. Okay, Maha, Thank thank Over you. to you, Pranta Thank sir. you. Thank you, Maha. Bye-bye. Take Thank, care. thank you, sir. Okay, Thank so you, with and this thank we you to come to all an the end. students. Thank you. Yeah. Bye. Okay. Students, please be connected with our department. We will send you link for the next Friday's event. Thank you so much for joining.